Good morning and welcome you all, my dear students. Today I am going to discuss some questions of your book Flamingo in chapter Indigo. I have already sent 2 videos earlier, so in this part I will discuss some NCERT questions. So you have to see the stanza, Gandhiji chided the lawyers. So question can be asked from this stanza that why did Gandhiji critical of the lawyers, or it can be asked why did Gandhiji chide the lawyers. Chide means scold. गांधी जी ने जितने भी लॉयर्स थे उनको क्यों स्कोल्ड किया. सो यू हैव टू पे अटेंशन. गांधी जी was very critical of the Muzaffarpur lawyers because they were charging a heavy fee from the poor sharecroppers. जो पुअर पीजेंट्स थे उनसे वो हैवी चार्जेस ले रहे थे. उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी. साइज ऑफ द फी वॉज वेरी हाई एज द पुअर पीजेंट्स वर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन. और पीजेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड थे, क्रस्ड थे, फियर स्ट्राइकन, बहुत भयभीत थे. दैट गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स वॉज यूजलेस. उनको मालूम था कि अगर हम लॉ कोर्ट्स जाएंगे तो हमारे लिए यूजलेस रहेगा. द रियल रिलीफ फॉर देम वुड बी टू बी फ्री फ्रॉम फियर. सो पे अटेंशन. गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द sharecroppers. Right? Peasants were so crushed and fear-stricken, and law courts were useless. The real relief for them was to be free from fear. So I hope you can understand well. Next part I am going to discuss with you. Why was Gandhi ji ready for the settlement of 25%? Why did Gandhi ji agree to the planters' offer of a 25% refund to the farmers? Or it can be asked, why did Gandhi ji agree to a settlement of 25%? Pay attention. Gandhi ji For Gandhi ji, the amount of the refund was less important than the fact that landlords had been forced to return part of the money, with it part of their prestige too. So he agreed to settlement of 25% refund to the farmers. गांधी जी 25% के रिफंड पर एग्री थे. अर्लियर he demanded 50% compensation, but he knew that they would not give. Finally, the British landlords, they were ready to pay 25% refund to the farmers. अब गांधी जी कहते हैं कि उनके लिए उनकी प्रेस्टिज ज़्यादा मायने रखती थी, मनी से ज़्यादा. For him, the amount of the refund was less important than the fact landlords had been forced to return a part of money. उसका लैंड का एक पार्ट देने के लिए वो तैयार हैं. सो गांधी जी वॉज एग्रीड, क्योंकि उसमें जो है सरेंडर करने के लिए वो तैयार हैं, चाहे वो एक पार्ट दे रहे हैं. बट दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ देयर जस्टिस. So I hope you can understand well. See the next part. Sharecropper arrangement was irksome. I have already told you. अब ये पार्ट क्यों लिया जा रहा था? Because earlier indigo cropping was very beneficial. It was a commercial crop. And when German had developed synthetic indigo, जब जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप की तो उन्होंने उनको रिलीज़ करना चाहा. शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरिक्सम टू द पीजेंट्स.
When Germany had developed synthetic indigo, so they obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. And poor sharecroppers, poor peasants, they were illiterate, they didn't know about their rights, and some of them signed willingly because they were not aware about their intention. So finally, Gandhi ji compelled them to refund 25% to the farmers. And pay attention. Next, the Battle of Champaran is born. The Battle of Champaran is born when and why did Gandhi ji exclaim this? Gandhi ji said Battle of Champaran is born when the prominent people agreed to go to jail for the course of Champaran. Gandhi ji knew that now he would be able to pressurize the government. अभी तक गांधी जी के साथ पुअर पीजेंट्स थे और अब गांधी जी के साथ लॉयर्स भी हैं एंड लॉयर्स वर रेडी टू गो टू प्रिजन विद गांधी जी एंड विलिंगली दे वर फॉलोइंग हिम. सो गांधी जी सेड दैट बैटल ऑफ चंपारण इज़ बॉर्न. क्योंकि गांधी जी के साथ जो हैं वो ताकत किस चीज़ की है? ट्रुथ, नॉन वायलेंस. ये सत्य की जीत थी, ये न्याय की जीत थी. सो गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट बैटल ऑफ चंपारण इज बॉर्न. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम जस्ट टेलिंग दैट गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड. ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बौखला गई, क्योंकि गांधी जी के साथ पुअर पीजेंट्स हैं और लॉयर्स हैं. उन्होंने लॉ कोर्ट्स को घेर लिया है, डेमोन्स्ट्रेशन किया, नारेबाजी की. सो द गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड एंड दे कुड टेक हेल्प ऑफ गांधी जी टू कंट्रोल द सिचुएशन. और उन लोगों को रेगुलेट करने के लिए, क्राउड को रेगुलेट करने के लिए उनको गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. हाउ डिड द चंपारण पीजेंट रिएक्ट व्हेन दे हर्ड महात्मा हैड कम टू हेल्प देम? पुअर पीजेंट्स, दे वर इलिटरेट. दे वेंट to Dr. Rajendra Prasad, they went to law courts, but they could not get any result. उसके बाद उनको ये लगा कि एक महात्मा है जो उनकी हेल्प कर सकता है. सो राजकुमार शुक्ला went to Mahatma Gandhi in order to complain about injustice which was heaped by British landlords. And when Gandhi ji reached Champaran and he saw the condition himself, and Gandhi ji received a summon to appear in court. I have already told you, क्योंकि गांधी जी ने लॉ ब्रेक किया था. गांधी जी वॉज ए लॉयर एंड ही ब्रोक द लॉ when he got someone to quit चंपारण. चंपारण छोड़ने के लिए जब उनको एक ऑफिशियल नोटिस मिला, देन ही रिसीव्ड टू अपीयर इन कोर्ट. नेक्स्ट डे थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स हैड असेंबल्ड इन मोतीहारी. दे डिडंट नो मच अबाउट गांधी जी. उनको गांधी जी का रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था. व्हाट डिड ही डू, इन व्हाट मैनर he was able to provide rights of the people, and in what manner he fought for his own people. So they didn't know much about Gandhi ji. उनको तो ये मालूम था ये एक महात्मा है, गांधी जी का रिकॉर्ड नहीं मालूम था. They knew that he had come there only to take up their cause. So thousands of them had a demonstration. And one more thing I am telling you,
Yes. When it was decided that Gandhiji would be sent to jail, and it was asked that what would the lawyers do. जब कहा गया कि गांधी जी को तो जेल हो जाएगी और दूसरे लॉयर्स क्या करेंगे, तो वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, several other prominent lawyers. They had arrived from Bihar. And if it was asked what would they do if he was sentenced to prison, Gandhi ji asked. So one of them replied that they had come to advise and help him. उसमें से एक ने कहा कि हम तो यहाँ पर एडवाइस करने आए हैं, जब गांधी जी को जेल हो जाएगी तो वो किसको एडवाइस करेंगे. गांधी जी asked what would happen, what about the injustice to the sharecropper. Gandhi ji demanded. Then one of the lawyer said that a person, a stranger who came from Lucknow in order to fight the cause, noble cause for these poor people. उन्होंने कहा एक व्यक्ति गांधी जी के लिए कहा है जो इतनी दूर से आया है, एक स्ट्रेंजर है और इन लोगों की लड़ाई लड़ रहा है. और नॉट ओनली दिस, ही वॉज रेडी टू गो टू जेल, जेल जाने के लिए भी तैयार है. और हम लोग जो हैं नियर बाई प्लेस के होते हुए अगर अपने अपने घर चले जाएंगे तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी, शेमफुल डिसर्शन. एंड इन दिस वे गांधी जी इन्फ्लुएंस द लॉयर्स. इस तरह से गांधी जी ने लॉयर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. And next, you have to pay attention. What were the terms of the Indigo contract between British landlords and द इंडियन पीजेंट्स और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट था. ये टर्म था उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट दैट द पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स टेनेंट्स एंड हैड टू प्लांट 15% ऑफ लैंड होल्डिंग विद इंडिगो. ये कहा था कि वो इंडिगो 15% पर इंडिगो ग्रो करेंगे और उसकी जितनी भी पैदावार होगी, सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट. एंड वेरी important point I am going to discuss with you, you have to pay attention that in what manner Gandhi ji improve the condition of the people. What steps were taken by Gandhi ji to improve the condition of people of Champaran. So pay attention. Gandhi ji saw the worst condition in Champaran, Bihar. और ये भी इन्होंने महसूस किया कि वहाँ पर बैकवर्डनेस का कारण इलिटरेसी है. Then he realized the main cause it was illiteracy. So then he decided to improve the condition in the field of education, health, and he made some efforts. So I am going to explain you these parts. Primary schools were opened in 6 villages. 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए गए ताकि वहाँ पर लोग जो हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकें, सो दैट दे कुड रीड एंड राइट एंड नो वन बिफूल दैम, कोई उनको बेवकूफ़ ना बनाए. सो प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 villages. Kasturba Bai, his wife, taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. और कुछ लोग volunteers थे, some people, they were ready to give their services voluntarily. Next, health conditions were miserable. Health condition लोगों की बहुत poor थी.
people were very lean and thin, they were disease prone. So Gandhi ji got a doctor to volunteer his services for 6 months. 3 medicines were available. वहाँ पे 3 medicines available थी, castor oil, कुनेन, सल्फर, ऑइंटमेंट. किसी को अगर कोटेड टंग की प्रॉब्लम होती थी, टंग में लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो उस केस में कास्टर ऑयल दिया जाता था. मलेरिया फीवर के केस में कुनेन प्लस कास्टर ऑयल, और किसी को अगर स्किन इरप्शन है तो उस केस में ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल. The Champaran episode was a turning point. Champaran episode considered to be the beginning of Indian struggle for independence. It was considered a turning point in Gandhiji's life. Or we can say that Gandhiji used satyagraha and non-violence at Champaran to achieve his goal. This is very important fact. So dear students, I am going to discuss with you. The Champaran episode was a turning point. In Champaran, peasants were greatly in fear of British government. वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. fear stricken cause of the problem was indigo and greed of the landlords. They had forced the tenants to plant 15% of their holdings with indigo and surrender the entire produce to the landlord. When synthetic indigo came, landlords were ready to release them. They demanded compensation. Later, when peasants came to know about synthetic indigo, they asked for their money. British hired thugs opposed them. They could not raise their voice. So Gandhiji reached there with the determination. He championed their cause. He was fighting, struggling for a noble cause. Many farmers demonstrated around the courtroom where Gandhiji was summoned. This made the British feel challenged. Gandhiji was summoned, so the Britishers felt challenged. Sharecroppers from Champaran came barefooted to see Gandhiji. Muzaffarpur lawyers too called on him, and he explained what he had done was an ordinary thing. He had simply told the Britishers that they could not order him in his own country. इन्होंने ब्रिटिशर्स को ये साबित कर दिया था उनकी ताकतें कितनी ज़्यादा पावरफुल हों और उनकी शक्तियाँ और दूसरों को दहला देने वाली हों. लेकिन वो इंडियंस दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज. Though it was unequal fight between poor Indians and powerful Britishers, Gandhiji tried to mold a new free Indian who could stand on his own foot. गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जहाँ पर हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो. This new realization gave him a direction to lead the freedom struggle and proved a turning point in his life. So this was the first time Gandhiji realized India is capable of mass movement. It was after this episode he started the national struggle for freedom across the country. And rest of the portion will be continue in my next video. Keep watching my video, and if any problem you can ask me, and just give your compliment in comment box. Thank you.